सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि mediastinum क्या चीज क्या है. What is mediastinum? How do we define mediastinum? So mediastinum, if you look in this diagram बेटा, दोनों साइड्स, ये आपको सामने जो एंटीरियर thoracic wall है वो काट के दिखाई हुई है, ठीक हो गया. So that now you are looking anteriorly towards the anterior of the thoracic cavity. ये आपको दोनों साइड्स पे लंग्स नजर आ रहे हैं और बीच में आपको हार्ट नजर आ रहा है enclosed within its pericardium, और ऊपर ये आपको जो ट्रेकियल रिंग्स नजर आ रही हैं रिंग्स की फॉर्म में, ये आपको ट्रेकिया नजर आ रहा है, ठीक हो गया. So the part of the thoracic cavity that lies between the two pleural or lung cavities on each side in the midline. So वो thoracic cavity का midline हिस्सा या space या खला या fibrous septum, जो कि दो lungs की cavities के बीच में दरमियान में in the midline of the thoracic cavity हिस्सा जो होता है, space जो होती है, that midline fibrous septum या midline space in the thoracic cavity between the two lungs on each side, it is known as mediastinum. This space, this fibrous septum, midline fibrous septum, or the midline space within the thoracic cavity, bounded on either side by the lung cavities, contains very important vital organs of the human body, that is heart enclosed in its pericardium, with large or great vessels emerging from the heart, as well as many structures passing through this space, either anterior to heart or posterior to heart. So ये जो midline space बेटा आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर आपको heart पड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये midline space thoracic cavity में जिसको दोनों sides पे lungs ने bound किया हुआ है, ये midline space को कहते हैं mediastinum. इसके different contents हैं, जिनमें से heart is the very most important content, जो कि enclose होता है अपने pericardium में. What is the next heading that you need to know about mediastinum? That is the division of the mediastinum. Division of the mediastinum. Mediastinum is divided by with the help of an imaginary horizontal line. Imaginary horizontal line that divides the mediastinum into two divisions. The part of mediastinum above the imaginary horizontal line is labeled as superior mediastinum, and the part of mediastinum that lies below the horizontal plane is labeled as inferior mediastinum. So mediastinum basically has two main divisions: superior mediastinum, inferior mediastinum. And how were these divisions formed? These divisions are formed with the help of an imaginary horizontal plane. Now, from where does this horizontal plane pass through? It passes anteriorly at the level of the sternal angle. And what was sternal angle? If you remember from the lectures and the upper limb, sternal angle was the joint, manubrium-sternal joint, the joint formed between the manubrium sterni above and body of the sternum below. This joint bulges out and can be palpated in the living beings as well as cadavers. And this is named as sternal angle or angle of Louis. This angle has clinical significance because many structures in the thorax lie at the level of this angle. So the line, it extends horizontal plane, imaginary horizontal plane that we used to divide the mediastinum into a superior mediastinum and inferior mediastinum. So this line
extends anteriorly from the sternal angle and posteriorly at the lower border of the fourth thoracic vertebra, so that it passes through the intervertebral disc that lies between the fourth and fifth thoracic vertebra. So this is the extent of the imaginary horizontal plane, anterior to posterior limit, that is used to divide the mediastinum into superior and inferior divisions. Inferior mediastinum is further subdivided into three parts: anterior mediastinum, middle mediastinum, posterior mediastinum. And what landmark do we need in order to subdivide the inferior mediastinum into these three subdivisions? Heart. Heart enclosed within its pericardium, since it lies in the middle of the inferior mediastinum. So the part of the inferior mediastinum that lies in front of the heart and pericardium, that is between the sternum anteriorly and pericardium enclosing the heart posteriorly. This part of the inferior mediastinum is labeled as anterior mediastinum. The part of the inferior mediastinum that lies between the pericardium enclosing the heart anteriorly and vertebral column posteriorly is labeled as posterior mediastinum. And the space that is occupied by the heart enclosed in its covering pericardium itself is labeled as middle mediastinum. After describing the divisions and subdivisions of the mediastinum, we now move on to individual divisions and their description of the mediastinum. So first of all, starting with the superior mediastinum. What is superior mediastinum? It is the division of the mediastinum that lies above the horizontal plane. And the horizontal plane was the imaginary plane that was extending anteriorly from the sternal angle going backward till the level of the intervertebral disc between the fourth and fifth thoracic vertebra. So superior mediastinum lies above the horizontal plane. Boundaries of the superior mediastinum include: superior mediastinum anteriorly is bounded by the manubrium sterni. Posteriorly, upper four thoracic vertebrae form the posterior boundary. On the sides, superior mediastinum is bounded by the pleura, and superiorly, the plane of the thoracic inlet lies. And inferiorly, it was bounded by the imaginary horizontal plane that was extending between the sternal angle anteriorly and lower border of the fourth thoracic vertebra posteriorly. So these are the boundaries of the superior mediastinum. Anteriorly, you can see this is the sagittal section that you can see in the diagram on the right side of the slide. And this is the manubrium sterni making the or bounding the superior mediastinum anteriorly. On the sides, since on the sides lungs are present and lungs are covered by pleura, so on the each side of the superior mediastinum is bounded by the pleura of the lungs. And which part of the pleura? Mediastinal pleura. Then posteriorly, upper four thoracic vertebrae, they bound the superior mediastinum, and inferiorly, the imaginary horizontal plane passing or extending between the sternal angle anteriorly and the lower border of the fifth thoracic vertebra posteriorly. And superiorly, the plane for the thoracic inlet lies. So what are the contents of the superior mediastinum? Again, this is an SCQ. Superior mediastinum contains tubes which include esophagus posteriorly and trachea anteriorly. You can see in the diagram that the esophagus posteriorly and trachea anteriorly, they both can be seen entering from the neck and entering the thoracic cavity by passing through the
superior mediastinum. Then we have arch of aorta, right? ये जो आपको बेटा ब्लैक कलर में लाइन नजर आ रही है, ये लाइन आपको वो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाया जा रहा है with the help of making it or highlighting it as a black line. ये आगे sternal angle का level है और पीछे lower border of the fourth thoracic vertebra है. So arch of aorta आपको नजर आ रही है along with its branches. ठीक हो गया. ब्रेकियोस्फेरिक वेन्स हैं वो इस लेवल पे नजर आती हैं. अपर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना केवा नजर आएगा आपको. इसके अलावा नर्व्स जो पास करती हुई आएंगी फ्रॉम द नेक इनटू द थॉरिक्स, जो एंटर करेंगी वो फ्रेनिक नर्व्स हैं और दोनों वेगाई नर्व्स हैं. राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व्स एंड राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व्स. Anterior mediastinum is one of the subdivisions of inferior mediastinum. So हमने क्या किया था पहले कि हमने with the help of imaginary horizontal plane जो कि sternal angle anteriorly and lower border of the fourth thoracic vertebra posteriorly तक extend कर रहा था, उससे ऊपर जो part था mediastinum का वो superior था और जो उससे नीचे वाला part था वो inferior था. और inferior को हमने 3 subdivisions में subdivide किया था with the help of heart. हार्ट से जो आगे वाला हिस्सा था मीडियास्टिनम का, इंफीरियर मीडियास्टिनम का, उसको हमने लेबल किया था एज एंटीरियर मीडियास्टिनम और वो लाई करता था बिटवीन द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंटीरियरली एंड पेरिकार्डियम विद हार्ट पोस्टीरियरली. जबकि इंफीरियर मीडियास्टिनम का वो हिस्सा जो कि पड़ा होता है बिटवीन दी वर्टेब्रल कॉलम पोस्टीरियरली एंड पेरिकार्डियम विद द हार्ट एंटीरियरली, उसको हमने लेबल किया था पोस्टीरियर मीडियास्टिनम. जबकि जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था बाय द हार्ट एंड पेरिकार्डियम, उस स्पेस को हमने नाम दिया था मिडल मीडियास्टिनम का. सो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि बेटा व्हाट इज द या किस डिवीजन में जो है वो पड़ा होता है हार्ट एनक्लोज्ड विद इन इट्स पेरिकार्डियम, तो योर आंसर शुड बी the heart with its pericardium is located in the middle mediastinum, which is actually the subdivision of inferior mediastinum. This is how you are going to answer that question. So anterior mediastinum से हम start करते हैं. Anterior mediastinum की location हमने देख ली कि it lies anterior to the pericardium with heart. Anterior mediastinum lies anterior to pericardium with heart. What are the boundaries of the anterior mediastinum? Anteriorly, it is bounded by the body of the sternum. Posteriorly, pericardium, that is actually the fibrous covering of the heart. Superiorly, the imaginary horizontal plane, passing between the sternal angle anteriorly, lower border of the fourth thoracic vertebra posteriorly, separating the inferior mediastinum from the superior mediastinum. Inferiorly, it is bounded and closed off from the abdominal cavity with the help of diaphragm. And laterally, just like superior mediastinum, you know that mediastinum के दोनों sides पे laterally क्या पड़ा हुआ, lungs, और lungs को किसने cover किया हुआ है, pleura ने. So naturally, the lateral boundaries of the anterior mediastinum are going to be formed by the mediastinal pleura. These are the boundaries of the anterior mediastinum. Anterior mediastinum के contents क्या होते हैं? Anterior mediastinum contains हमारे पास आ जाता है इसमें trachea. ठीक है, trachea जो है वो almost at the level of the sternal angle bifurcate कर जाता है अपने main bronchi में at the level of the sternal angle. इसके अलावा adults में तो rudimentary हो जाता है, जबकि यंग एज में थाइमस पड़ा हुआ होता है जो कि काफी वेल डेवलप्ड होता है यंग एज में. सो थाइमस हो जाएगा इसका कंटेंट. ठीक है, इसके अलावा ब्लड वेसल्स कौन सी इसमें रन कर रही होती हैं एंटीरियर मीडियास्टिनम में? जस्ट अलोंग द lateral borders of the body of the sternum we have internal thoracic vessels. ठीक हो गया? And some group of lymph nodes along the lining of the trachea. Then now we move on to the middle mediastinum. Middle mediastinum, as we established earlier, is the one located between the anterior and posterior mediastinum. And it is occupied mainly by the heart enclosed in its fibrous covering called pericardium. So what are the contents of the middle mediastinum? Middle mediastinum के अंदर बेटा पड़ा होता है pericardium. उसके अंदर क्या होता है? Heart.
हार्ट से ग्रेट वेसल्स इमर्ज कर रही होती हैं, पल्मोनरी ट्रंक एंड असेंडिंग एओर्टा, ठीक हो गया. एंड देन वी हैव लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना केवा दैट इज अबाउट टू एंटर द राइट एट्रियम, upper part of inferior vena cava that is again about to enter the right atrium, and then ultimately हमारे पास नहीं बाइफिकेशन को वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी इंक्लूडेड इन द एंटीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है, बाज बुक्स में हो सकता है बाइफिकेशन को मिडल में भी लिखा हो, ठीक हो गया. देन वी हैव पोस्टीरियर मीडियास्टिनम. पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में बाउंड्रीज क्या आ जाती हैं? सुपीरियरली वी हैव द हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि वही इमेजिनरी प्लेन था, स्टर्नल एंगल से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ थोरैसिक वर्टेब्रा फोर्थ तक जा रहा था. Inferiorly again and closed off from the abdominal cavity with the help of diaphragm. Anteriorly क्या पड़ा हुआ है? Pericardium enclosing the heart. Posteriorly क्या पड़ा हुआ है? Thoracic vertebrae. कौन से वाले? Fifth thoracic vertebra से लेकर 12th thoracic vertebra तक. और laterally क्या पड़ा हुआ है? Same lungs and pleura. इसके contents क्या आ जाते हैं? Esophagus, descending thoracic aorta, and azygous and hemiazygous system of veins. इसके अलावा पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में थोरैसिक डक्ट भी आ जाती है, ठीक है, और इसके अलावा सिंपैथेटिक चेन भी आ जाती है जो कि आपको पता है वर्टेब्रल कॉलम के आइदर साइड पे पड़ी हुई होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मीडियास्टिनम.